So class 12 chemistry. This is a very common question usually comes in your exam from the chapter alcohols and phenols. Which one is more acidic? They usually give phenol. Phenol. Phenol is having here OH group, right? And C2H5 means ethanol. Now, if we see here, which one is more acidic and why? Okay, let's try to study in a logical point. Target this one, both of this one. Right? Now see here. This is more because here it is more acidic. More acidic. I will give the reason. And this is less acidic. I am going to give you the reason. See here the explanation. I'll just give just one explanation here. Phenol undergo resonance. Phenol undergo resonance. Actually, it is having this type of, but it uses the electron density. That's called resonance hybrid. The oxygen is having two pair of lone electrons. They go resonance. Resonance means delocalization of pi bond within the ring. Now this will be here partial double bond character. Here oxygen is bonded. Here this one is bonded. This shifted back there. This comes to the para positions. Right. So what happens when you go further? Now here is a double bond, partial double bond character develop. यहाँ पर हो गया, ठीक है ना. अब यहाँ पर वो जाते रहेंगे रेजोनेंस, ये ऐसा होगा फिर इसके बाद ऐसा, ठीक है ना. सो there's a resonance effect, resonance in phenol, okay. But in the case of the ethanol C2H5OH, no resonance effect, no resonance effect. सिर्फ एग्जाम में ये लिखिए, नो रेजोनेंस इफेक्ट. ना आप बोलेंगे सर यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पर आपका शिफ्टिंग कहाँ होंगे, ये दो लोन पे इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे शिफ्टिंग नहीं हो. यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अगर डेवलप नहीं होंगे तो रिलीज कैसा होगा, मीन्स ये सोल्यूशन में ज़्यादा जल्दी चले जाएगा एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये आपका इजीली सॉल्यूशन में चले जाएंगे. इजीली goes to aqueous solution. Aqueous means पानी, ठीक है. और ये आपका difficult to go to solution, difficult to go to solution, to aqueous solution. Aqueous means पानी, aqueous solution, ठीक है ना. ठीक है, समझ में आ गया आपका लॉजिक. रेजोनेंस इफेक्ट है आपका, यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड बनाया है किसने, डीलर ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या गया, ये ऑक्सीजन क्या गया, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये आपका जल्दी चले जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में. तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, यहाँ आपका क्या हो रहा है, नो रेजोनेंस इफेक्ट. हैंस phenol is more acidic than ethanol. Finish. I hope you'll copy in a separate fair copy and all. Those who subscribe my channel, please subscribe it. Those who like my channel, please press on the like button and pass the comment. Thank you.